Greetings. This is a new schedule that we're trying, starting today and Wednesday instead of Tuesday and Thursday. मेरी तरफ से आप सबको सलाम और आज से हम जो नया टाइम टेबल है उसके मुताबिक जो है वो शुरू करेंगे. This is something I've discovered through many years of working not just in schools but in churches where I've pastored. और ये मैंने जब मैं चर्च में एज अ पास्टर काम करता था तब से मैंने ये शुरू किया. Something that's good sometimes has to move so that something else that's good can move into its place. और ये अच्छा है कि हम जो है कि अच्छे तरीके से उसका आगाज करें. So I'm very glad today to have extra help in doing the interpretation. We had to figure out how to make this work. और मुझे खुशी है कि मुझे जो है तर्जुमा करने के लिए हेल्प मिली है. And I think the people who are going to be taking the English class will really get a lot out of that. She's a very good teacher. और जो इंग्लिश की क्लास आप लोगों ने शुरू की है वो मेरा ख्याल है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि वो बहुत अच्छी टीचर है. So let's pick up where we left off last time. We were talking about Solomon. चले मैं दोबारा वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था सुलेमान से. Solomon started with a lot of advantages, security and wealth, and God had given him a lot of wisdom. सुलेमान को खुदावन ने बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं उसको अकल अता की थी, उसको विजडम दी थी ताकि वो अपने मामलात को अच्छी तरह से जो है रियाया के मसलों को हल कर सके. But he also had a weakness, and his weakness was he loved a lot of foreign women. लेकिन उसके अंदर कुछ कमजोरियां भी थी और वो ये कमजोरियां थी कि वो दूसरी जो औरतें थी जो उसके कबीले में से नहीं थी वो उनके साथ प्यार करना शुरू कर दिया था उसने. And because he was rich, powerful, he could do anything he wanted to do, and that power caused him to eventually be corrupted. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ज़्यादा अमीर था, उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी और इससे उसने ये फायदा उठाया और इस गुनाह में गिर गया. And we see that with the passage we looked at last time from 1 Kings 11, 7 and 8, that Solomon built not only the temple of the Lord, he also made high places or temples for Chemosh and Molech. And he did this for all his foreign wives so they could worship their own gods. और हमने इस पैसेज में देखा था पिछली दफा जो है सलातीन 11 उसका 11वां बाब 7 से 8 आयत में कि वो किस तरह जो है वो टेंपल के अलावा दूसरी जो है हाई प्लेस बनाता है ताकि वहाँ पर उसकी जो बीवियां हैं उसके साथ मिलकर तो दूसरे खुदाओं की इबादत कर सके. And it says in 1 Kings 11, okay. No, not yet. I'm trying to get this to work. It's not doing it. Okay. That because of this, the Lord was angry because he had turned away from the Lord. और हम देखते हैं पहला सलातीन उसके 11 बाब और उसकी 9 आयत में के खुदावंद इस वजह से उसके साथ बहुत ज्यादा नाराज हो गया जो उसने दूसरे खुदाओं की तरफ वो जाना शुरू हुआ था. And I made this point last time, but it's always worth repeating. Even though early in his life Solomon had great revelation from God, God had appeared to him, but in his later years he turned away from the Lord. हम देखते हैं कि शुरू में खुदावंद जो है उसके साथ था और उसको उसने बहुत ज्यादा बरकत दी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो खुदा की तरफ से फिर गया और उसने दूसरे खुदाओं की तरफ जाना शुरू कर दिया. And so this is what we see in 1 Kings 11 through 13. You could read that.
ओके हम यहाँ पर देखते हैं सलातीन पहला सलातीन उसके 11 आयत से लेकर 13 आयत तक। मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगी इसको। इस सबब से खुदावन ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादम को दूंगा। तू भी तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे अयाम में ये नहीं करूंगा, बल्कि इससे तेरे बेटे के हाथ से छीनूंगा। फिर भी मैं सारी सल्तनत को नहीं छीन लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर जिसे मैंने चुन लिया है एक कबीला तेरे बेटे को दूंगा। All right, you see what Solomon's problem was. Solomon had not been faithful to the covenant. और आप देखते हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सोलोमन की वो ये है कि वो खुदावंद के जो अहद के साथ है वो पूरा नहीं उतरा। His main offense was idolatry. और उसका जो सबसे बड़े जो उसकी गलती थी, जो उसके सबसे बड़ा गुनाह था, वो बुतों की पूजा करना था। He committed idolatry, and because he was king, what the king does, people follow. So he encouraged idolatry among the people. तो हम देखते हैं कि जब सुलेमान ने जो बुतों की पूजा शुरू की, तो क्योंकि वो बादशाह था तो वो लोगों के लिए एक नमूना था। सो जो दूसरे लोग थे वो उसको उसकी नकल करना शुरू हो गए और वो भी दूसरे बुतों की पूजा करने लगे। And this is where it's really important to remember that God had made a promise to David back in 2 Samuel 7. और ये हम देखते हैं कि खुदावंद ने पीछे जो है 2 सैमुअल में उससे दाऊद से जो प्रॉमिस किया था। And even though God has told Solomon that most of the kingdom is going to be taken away from him, one tribe is going to be preserved for the sake of David. और हम देखते हैं कि खुदावंद ने उससे कहा कि जो सल्तनत है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, और जो एक सल्तनत है वो दाऊद की खातिर जो है खुदावंद से So we are at an important turning point in the history of Israel at this very time. और हम देखते हैं कि एक बड़ा जो है तब्दीली है इस तारीख में ये। Because when Solomon dies, the kingdom is going to split into 2 parts. और जब सुलेमान मर जाता है तो हुकूमत जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। But God is going to preserve one part, one tribe for David and David's heirs. So खुदावंद जो है वो एक जो हिस्सा है सल्तनत का वो डेविड के लिए महफूज करना चाहता है। So God said this in 1 Kings 11, and you actually read about the event of the splitting of the kingdom in the next chapter, 1 Kings 12. So खुदावंद फर्स्ट जो है पहला सलातीन उसके 11 बाब में बताता है कि हुकूमत जो है 2 हिस्सों में तकसीम होगी। Now, we need to maybe appreciate that this did not come out of nowhere. It didn't just magically suddenly happen. There had been a building resentment among the people against Solomon. और ये एकदम से वाकया नहीं हुआ, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोलोमन के खुदावंद की तरफ से फिर जाने की वजह से होना शुरू हुआ। Solomon had built a lot of buildings, not just the temple, and he had used a lot of forced labor from the people of Israel, and taxes were high. और सुलेमान ने जो बहुत सिर्फ जो हैकल ही नहीं बनाई और ज्यादा बिल्डिंग्स भी बनाई, और उसने ये जो है वो टैक्स से पैसे इकट्ठे किए, और दूसरा जो है अपना
इजरायली जो थे उनसे जो है उसने सारा माल वगैरह लिया. So when Solomon died and his son Rehoboam became king, probably the people were hoping that things would get better, at least easier. और जब सोलोमन का बेटा जो है रिहोबोआम जो है मरने के बाद सोलोमन के रिहोबोआम जब आता है तो लोग सोचते हैं कि बेहतर जो है हुकूमत होगी. But Solomon's son Rehoboam listened to the wrong advice. He listened to the advice of young, inexperienced people rather than old and wise people. लेकिन रिहोबोआम जो है वो जो दूसरे जो थे यंग लोग उनसे मदद लेना शुरू हो गया. अगरचे कि उसको चाहिए था कि वो बूढ़े लोगों से मदद लेता और उनकी एडवाइस और उनकी नसीहत पर अमल करता. And Rehoboam says, well, you think my father was hard on you, I will be even more harsh and more demanding. और रिहोबोआम ने ये उन पर साबित कर दिया कि तुम्हारा जो मेरा बाप ही सिर्फ जो तुम लोगों पर इतना सख्त नहीं था, मैं उससे भी ज्यादा तुम लोगों के लिए सख्त और मुश्किल पैदा करूंगा. So in effect, he was trying to frighten the people to make them afraid of him and to just obey because of fear. और उसने लोगों को अपने इस दबदबे की वजह से बहुत ज्यादा खौफजदा किया. But he was figuring wrong because he listened to this foolish advice. क्योंकि वो ये सब जो है वो गलत कर रहा था क्योंकि उसने गलत जो है नसीहत पर चलना शुरू कर दिया था. The people from the 10 northern tribes already had a leader by the name of Jeroboam, who led the 10 tribes of the north to break away and form their own nation. और जो थे 10 कबीले उन्होंने पहले ही जो है वो अलहदा हो गए थे और अपना अलहदा उन्होंने शुरू कर दिए थे हुकूमत. And Jeroboam and the northern tribes, they took the name Israel with them. और जेरोबोआम जो थे उन्होंने अपना नाम वो इस्राएल के साथ लगाना शुरू कर दिया था. And Solomon's son Rehoboam, he still had a kingdom, but it was now just Judah and a little bit of Benjamin and a little bit of Levi. It's a very small kingdom. Rehoboam is still king in Jerusalem in Judah, but it's just the tribe of Judah with just a few other people. Okay, जो रहबाम ने ऑलरेडी जो थे वो इस्राएल में अपना जो हुकूमत शुरू कर दी थी कि उसमें सिर्फ चंद ही लोग जुदा के जो चंद ही लोग थे. All right, now this is really important and helpful for you when you're reading First and Second Kings, to realize that there is a difference between these two nations. Okay, जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इन दो चीजों दो नेशंस जो हैं इजराइल और जूडिया में बहुत ज्यादा फर्क है. Because the way the history is recorded in First and Second Kings, it's chronological, and so the writer will switch back and forth. He'll talk about Israel, and then he'll talk about Judah, and then he'll go back and talk about Israel, and he'll talk about Judah. Okay, जब आप पढ़ते हैं इन दोनों कौमों के बारे में तो हिस्ट्री में पता चलता है कि जब उन्होंने जब लिखी तो वो कभी वापस इजराइल पर चले जाते हैं और कभी वो जूदा के बारे में बताते हैं और फिर दोबारा इजराइल के बारे में और फिर वो जूदा के बारे में बताते हैं. तो इस तरह ये चलती है हिस्ट्री में. So get that distinction in your mind. After Solomon, these are two separate nations. और आप ये इस चीज का ध्यान रखें कि सलमान के बाद ये दोनों जो हैं वो आती हैं इजराइल और जूदा. Here is a sort of timeline or chart so that you can see what happened in the future of these nations. अभी अब यहाँ पे देखते हैं टाइमलाइन जो है ओल्ड टेस्टामेंट का कि किस तरह से नेशंस जो है जो कौमें जो हैं वो बयान की गई हैं.
when Saul and David and Solomon were king, there was just one nation, and it was called Israel. Okay, जब सॉल डेविड और सलमान जो था वो किंग थे, बादशाह थे, तो उस वक्त ये सब जो है वो कहलाते थे इज़राइल. वो एक सब यूनाइटेड थे. But the people still had more of an identity with their tribe than they did with their nation as a whole. लेकिन इसके अलावा भी लोगों की एक अलग जो थी शनाख्त वो भी थी, जो इज़राइल और जूडिया दो थे वो. And so for a lot of people in Israel, they were happy to be subjects of David, but Solomon made them think we would be better off with our own king. Okay, जो ज़्यादातर लोग थे वो डेविड से कहलाना चाहते थे, लेकिन उसके अलावा वो सोलोमन से भी वो चाहते थे कि उससे भी रेफरेंस उनका हो. Now, this is an approximate date, but it's good for us to use. It's probably the year 922 BC when Solomon died. जो roughly जो डेट है वो सुलेमान की वफात की वो 922 before Christ है. And so from that point, you've got two kingdoms, Israel and Judah. और इस दौर में हम देखते हैं कि दो सल्तनतें थी, इज़राइल और जूडिया. But if you look at this arrow where Israel is, you see that they lasted only until 722 BC. जब हम देख रहे हैं इस टाइमलाइन में, तो इज़राइल के साथ जो एरो बना है वो 722 BC का है. So about 200 years. और तकरीबन 200 साल. Judah lasted as an independent kingdom, more or less, until 587, and then they were taken into exile. But they got to come back after a few years. जो जूदिया था उसको 587 तक जो है उसकी हुकूमत थी, लेकिन उसके बाद जो है वो असीरी में चले गए. By the time this had happened, Israel in the north was gone and had been gone for a long time. और जब ये सब कुछ हुआ उस दौरान में इज़राइली जो थे वो दोबारा वहां से वापस चले गए. And Israel, in that sense, never really came back. और जो इस्राएली थे वो दोबारा वापस नहीं आए. But Judah got to come back, and so their history continues. लेकिन जूदा जो वापस आए और उनकी जो तारीख थी दोबारा से शुरू रही. We'll look at this chart again, but just to remember that that's an important date, that 922 BC, absolutely important. And I would say that's a date to remember. Also, the date when Israel was destroyed in 722, that's another date that's good to remember. It just helps you understand. And then the exile for Judah in 587, that's very, very important also. हमें ये जब हम टाइमलाइन देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, तो हमें ये तारीखें हैं जो है वो 922 BC याद रखना जरूरी है. और उसके बाद जब इज़राइल 722 में जब वो वापस गया और दोबारा से जो है जूदा की जो है सल्तनत और उसका जो कंटिन्यू रहना है वो सब 587 से 539 तक उनकी असीरी जो है वो हमें बताती है. And one reason why it's important to know just a little bit of the history is because it's not just history for the sake of knowing history. It's history so that you can understand the prophets better. Okay, जो हम ये हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि हम तारीख पढ़ रहे हैं. इससे हमें पता चलता है कि जो हम
जो prophets थे उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा information मिलती है इससे. When you read Isaiah, when you read Jeremiah, Ezekiel, if you know where they fit in this history, they make a lot more sense. और जब हम जर्माया और इज़ेकियल वाला पढ़ते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा जब भी हम देखते हैं टाइमलाइन तो हमें पता चलता है कि उस सारी बात का हमें उससे अंदाजा होता है. And when you study the prophets with just a little bit of historical knowledge about their time, you'll be amazed and blessed by how much more you get out of the prophets. जब हमें टाइमलाइन को देखकर हम जब समझकर उसको प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलती है और उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. Okay, let's look at a map so that we can sort of see the differences as far as where these nations were. हमें अभी आपके सामने नक्शे से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर ये सब nations से. Okay. May have to call this. That happened to us several times. Our screen has gone black. I don't know whether you could hear us now. Okay, we're back. Let's go back. Good, thank you. We've had some electrical problems here. Sorry. They worked on our substation. Never mind. Let's just talk about this. Okay, you can see here roughly the line between Israel and Judah is just north of the Dead Sea, just a little north of the Dead Sea. अब आप देख रहे हैं कि इज़राइल और जो जुदा है उसके दरमियान जो सिर्फ जो जॉर्डन what is it? The Dead Sea. Dead Sea के जो है आप देख रहे हैं कि उसके दरमियान जो लाइन है. And you can see also, if you know the geography of this, that even though Judah keeps going far south here, most of this is desert. आप देख रहे हैं कि जो लाइन मैंने अभी बनाई है वो जो है वो साउथ की तरफ जाती है और डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा डेजर्ट है. Israel is bigger. It has many more people. It's a much larger nation than Judah. इज़राइल जो है बहुत बड़ी जो कौम है वो जुदा से बहुत ज़्यादा उसको कह सकते हैं कि आप बड़ी है. And you can see that Israel is on both sides of the Jordan River. और आप देख सकते हैं कि जो इज़राइल है वो जॉर्डन रिवर की दोनों साइड्स पर है. And they go all the way up here beyond Dan, up toward Damascus. और वो दमास्कस तक जाती है. So, two separate nations for 200 years. So जो दो मुख्तलिफ जो हैं कौमें वो आप देख सकते हैं 2000 साल पहले. But there's some important distinctions besides having a border that we need to be aware of. और जो बाकी जो बॉर्डर के अलावा जो हम बाकी दो चीजें हैं जो मुख्तलिफ हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर. First of all, in Judah, the king is a descendant of David. सबसे पहले जो हम देखते हैं जो किंग है वो डेविड की नस्ल से है. And remember, God had made a promise to David that his descendant would reign forever. और खुदावंद ने डेविड से जो वादा किया था कि उसकी जो नस्ल है वो हमेशा हुकूमत करेगी. Now, as Christians, we know that ultimately that will take Jesus to fulfill. और हम क्रिश्चियन होने के बेस पर हम ये देखते हैं कि किस तरह ये जो है सब खुदा यीशु के जरिए भी पूरा हुआ. Also, in Judah, they had the capital city and they had that temple which had been built during Solomon's time. So it's often called Solomon's Temple. और जुदे के दौर में जो जेरूशलेम बना उसको Temple of Solomon भी कहते हैं. And also, they had the priesthood that was descended from Aaron.
और इसके अलावा जो है priesthood वो जो क्या कहलाता है एलमन. Now, that doesn't mean that all of these people were all living right with God. इसका मतलब ये नहीं कि सब जो लोग थे वो सब खुदावंद के साथ चलते थे और खुदा की हुक्मों को मानते थे. But it does mean that there was more of a legitimate historical connection. लेकिन इसका मतलब है कि इसके अलावा भी कोई और जो उनके दरमियान था वो ताल्लुक था. The reality is that the worship in Judah and in Jerusalem was mostly right. और जो हकीकतन ये था कि वहाँ पर जो वर्शिप की जाती थी वो आमतौर पर सही होती थी. With the right priesthood and so forth. But the hearts of the people often were not right with God. अगरचे कि वो वर्शिप करते थे खुदा की लेकिन उनके जो दिल थे वो खुदा की तरफ सही नहीं थे. And Judah continued to have its own problems with idolatry being tolerated outside of the city, and sometimes even the king indulged in idolatry. और युद्ध की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो इसके अलावा भी जो बुतों की पूजा करते थे और जो बादशाह था वो भी इस चीज को प्रमोट करता था कि बुतों की पूजा की जाए. So you could say that at the heart of things in Judah, at least there was this historical continuation. तो हम देखते हैं कि ये इसी तरह जो जुदा में वो होता रहा, एडल्ट्री चलती रही, बुतों की पूजा होती रही. But these factors, Davidic king, central worship, and legitimate priesthood, these are the things that Israel turned their back on. और इन चीजों को जो आप देख रहे हैं कि डेविडिक किंग्स और उनकी जो यरूशलेम में दूसरे बुतों की पूजा करना, ये सब जो है वो इसमें कंटिन्यू रहा. So let's quickly compare Israel as a separate nation. What was it like there? आज हम देखते हैं कि जो इज़राइल है वो किस तरह एक अलग कौम है. Obviously, the kings in northern Israel are not going to be from David's line. यकीनन जो इज़राइल के जो नॉर्दर्न किंग थे वो डेविडिक किंग्स में से या दाऊद की लड़ी में से नहीं थे. But it's worse than that. They also had their own places of worship where they set up golden calves. और इनके अलावा आप देखते हैं कि उनके पास दूसरे जो है बुत थे जिनकी वो अलग से वर्शिप भी करते थे, उनकी पूजा करते थे. And you might remember there had been an incident with the golden calf back in the wilderness during the time of Moses, when Moses was up on the mountain. और आप देखते हैं कि जब मोसेस जब जाता है 10 हुक्म लेने के लिए और लोगों ने कैसे बनाए गोल्ड के, उन्होंने उनको ढाल कर और बुत बनाए और उनकी वर्शिप की, सोने और चांदी की बुतों की. And also from the beginning of Israel as a separate nation, pretty much anybody could be priest if they wanted to be priest. The king would let them be priest. Sorry. और हम देखते हैं कि जब आप हिस्ट्री में जाए तो आप देखते हैं कि इज़राइल में कोई भी जो है प्रीस्ट हो सकता था. Now, here's an important thing to realize, though, and you see it right away, is that even though Israel turned their backs on what God had established in Jerusalem, God kept sending them his own prophets. अगरचे कि हम देखते हैं कि इज़राइल जो बहुत ज़्यादा खुदा की तरफ से दूर होना शुरू हो गया था, लेकिन खुदा ने उनको नहीं छोड़ा और खुदा हमेशा किसी न किसी तरह से जो है अपने प्रॉफिट्स भेजता रहा ताकि उनको वापस अपनी तरफ लेकर आए. And you see the name there of just some of the prophets: Elijah, Elisha, Amos, and Hosea. और हम इन नबियों में से देखते हैं कि एलाइजा था, एलिशा, एमस, होसेया और
बहुत सारे और. So even though they have turned away from the son of David, God says, you're still mine, and God still spoke to them as though he still owns them. और अगर चाहे कि वो जो है दाऊद के लड़ी में से या उस तरफ से अपना उन्होंने मुंह फेर लिया था, लेकिन खुदावन फिर भी उनको उनके फेवर में था और उन्हें प्यार करता था और चाहता था कि वो दोबारा वापस आए. And God is going to be saying to them over and over again, you are still my covenant people, and I want you to live according to the covenant. और खुदा हमेशा उन्हें ये याद दिलाता रहा अपने नबियों के जरिए कि वो चुनी हुई कौम है और हमेशा खुदा के चुनी हुई कौम रहेंगे और उनको वापस बुलाने के लिए वो अपने जो नबियों को भेजता रहा. I mentioned these separate worship centers at Dan and Bethel. Let me show you where those are on the map, so you'll see how strategic this was by Israel. मैं दिखाता हूँ आपको कि ये दो जगह जो मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाई वो किस तरह से इजराइल के लिए जरूरी थी और अहमियत रखती थी. You see there toward the top of the map, there is Dan, about as far north as you can get in Israel. आप बिल्कुल ऊपर देखते हैं, सबसे ऊपर जो डैन है वो नॉर्थ में आपको नजर आ रहा होगा. And I put a B with a circle around it down here where Bethel was. और आप बी भी देख सकते हैं जिसको सर्कल किया हुआ है, वो बैतल है. And notice how close that is to Jerusalem. और आप देख सकते हैं कि कितना ये करीब है यरूशलेम के. But the kings in Israel didn't want their people to be going to Jerusalem to worship the Lord. और जो इजराइल के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे जो है वो लोग जाकर यरूशलेम में इबादत करें. So they said, no, you don't need to go to Jerusalem. You can stay here in our country and worship the Lord, and we'll put up this golden calf. And of course, that's mixing of idolatry in with the worship of the Lord. और इजराइल के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जाकर लोग वहां पर यरूशलेम में इबादत करें. उनको कहते थे कि तो हमारे पास जो है बुत हैं जो तुम उनके सामने जाकर इबादत कर सकते हो बजाय कि यरूशलेम में जाओ. And I suppose that the reason they put a golden calf up in Dan is because they didn't want the people to have to travel so far, and so they made it more convenient and put a worship site up here. Now, it's worship supposedly to the Lord, Yahweh, but it's really that golden calf, so it's really idolatry. Okay, जो डैन में उन्होंने इसलिए बुत वगैरह रख दिए थे ताकि लोगों को बहुत ज्यादा लंबा सफर करके ना जाना पड़े और लोगों को कहते थे कि इधर ही जो है तुम वर्शिप करो. And it wasn't the priests from the line of Aaron, they're all down in Jerusalem. और ये जो है लाइन ऑफ एरन से नहीं थे, वो जो है यरूशलेम से थे. Now, when the story of these two nations is given to us in 1st and 2nd Kings, the writer keeps jumping back and forth between the two. जब हमें ये पहला सलातीन और दूसरा सलातीन की जो हमें सारी तारीख दी गई है तो उसमें हम देखते हैं कि जो लिखने वाले हैं वो उन्होंने कभी वो आगे आ जाते हैं लाइक हाल में और कभी वो बिल्कुल पास्ट में चले जाते हैं बिल्कुल. So I want to simplify this just a little bit by I'm going to talk about Israel all the way through to the end of its history, and then we'll talk about Judah. हम सबसे पहले इजराइल के बारे में बात करेंगे और सारा उसकी हिस्ट्री और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में और फिर योद्धा के बारे में. So this is the beginning of the line of kings in Israel. There'll be some more on the next pages. अभी हम देखते हैं कि इजराइल की जो लाइन है उसका जो सारे नाम हैं आपके सामने
आप बोर्ड पर से देख सकते हैं उसको. Okay, I see that my red line, I meant for my red line to be up here under Jeroboam. It's for some reason it's slipped. I don't know why that happens. Okay, मैंने जो जेरोबोआम के नीचे जो लाइन लगाई है आप देख सकते हैं उसको. This is the king who led the breakaway from Solomon's son. और ये जो है वो आप देख सकते हैं कि वो सोलोमन का बेटा रहबाम है. Now, he's not actually called Jeroboam the first in the Bible. He's called Jeroboam, son of Nebat. Okay, जो आप देख सकते हैं कि बाइबल में ये जेरोबोआम 1 जो है जो पहला नहीं कहलाता बल्कि ये जेरोबोआम son of Nebat. नेबैत का बेटा जो है वो कहलाता है. Yeah. Now, in books about the history of Israel, he's called Jeroboam the first because later on there'll be another king who's also called Jeroboam. Okay, बाइबल में जैसे इसलिए ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि जो दो जेरोबोआम है इसलिए इसको पहला जेरोबोआम कहा जाता है. But in the Bible, you'll just see him called Jeroboam, son of Nebat. लेकिन बाइबल में हम इसको जेरोबोआम the son of नेबैत देख सकते हैं. All right, and you see that when he started as king, about 922 BC, हम देखते हैं कि इसकी जो हुकूमत है वो 922 BC से and he was king for about 20 years. और वो 20 साल तक जो है उसकी हुकूमत रही. And Jeroboam, son of Nebat, is the one who put up the 2 golden calves. और हम देखते हैं कि जेरोबोआम जो नबात का बेटा है उसने 2 जो गोल्डन है He's the one who let anybody who wanted to be, he let them be the priest. और यही है जिसने इजाजत दी कि जो कोई भी प्रीस्ट बनना चाहता है वो बन सकता है. And as we look down this list, you can see that some of them did not last very long. 1 year, 23 years, 1 year, a week, and then 8 to 10 years. और हम देख सकते हैं कि जो नीचे आप लिस्ट में नाम देख रहे हैं वो ज्यादातर उनकी हुकूमत जो है वो 1 साल तक क्योंकि 23 साल और फिर 1 वीक तक भी रही है और फिर 8 से 10 साल तक भी रही है. But you'll notice I also put some stars by the names of certain ones of these. और आप देख सकते हैं कि कुछ के नामों के आगे मैंने एक स्टार का निशान भी बनाया हुआ है. And that doesn't mean that they were good. और इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अच्छे थे इसलिए मैंने उनको स्टार दिया है. What it means is this person was killed by the king who came after him. इसका मतलब ये है कि ये बादशाह है जो मरा जो इसके बाद जो बादशाह आया. So Nadab was killed by Baasha. So Nadab जो है वो बादशाह से पहले मरा. Baasha's son Elah, he only lasted about a year before Zimri killed him. और बादशाह का जो बेटा था इला वो सिर्फ 1 साल तक हुकूमत उसने की और उसके बाद जिम्री आ गया. But we've got 2 stars by Zimri's name because he killed Elah and Omri killed him. Okay, जो मैंने 2 स्टार्स जो उसके जिम्री के आगे बनाए हुए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि वो जो है वो इला को मारा और जो जिम्री है वो उमरी को मारकर उसने बादशाहत शुरू की. And we'll see some more of this in the later history of Israel. There was a lot of assassination of the king and somebody else becoming king because he had killed the previous king. और हम तारीख में देखते हैं कि जो काफी ज्यादा जो है बादशाह वो पुराने बादशाह को मारकर तो खुद बादशाह बने. But not all of them were like that. Omri is interesting because not a lot is said about him in the Bible. बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है लेकिन omri इसलिए है कि किसके बारे में बाइबल में बयान किया गया है.
But in secular history, sources that we have from outside the Bible, Omri was a very successful king. लेकिन जो बाइबल से हटकर जो दूसरे हमें रिसोर्सेस मिलते हैं उसमें बताया जाता है कि आमरी जो था बिल्कुल मुख्तलिफ बादशाह था. But this shows us something about the interest of whoever wrote First and Second Kings. Sorry. This shows us that the person who wrote First and Second Kings was interested in something besides their success. Okay, जो हम देख सकते हैं कि हमें पता चलता है कि इसके अलावा भी जिसने भी तारीख लिखी कि वो इसके अलावा आमरी के अलावा भी और भी चीजों में दिलचस्पी रखते थे. These kings are evaluated in the books of First and Second Kings. They're evaluated by how sinful they were. और सलातीन पहले सलातीन और दूसरे सलातीन में हम देख सकते हैं कि इनके जब उनको पढ़ा गया उनके बारे में लिखा गया तो पता चलता है कि कितने ज्यादा गुनाहगार थे. And some were worse than others. और इनमें से कुछ जो थे ज्यादा जो थे ज्यादा गुनाहगार थे. Let's take, for example, Omri. He was very successful from a secular standpoint. और हम देख सकते हैं कि जो आमरी था वो बहुत ज्यादा कामयाब था. But he's not that important in the religious history of Israel. लेकिन वो इज़राइल के जो रिलीजियस हिस्ट्री थी उसके मुताबिक इतना जो है अहमियत नहीं रखता था. A more important king for religious purposes is Omri's son, and this is Ahab. और जो ज्यादा अहमियत रखता था मजहबी लिहाज से वो आमरी का बेटा अहब था. And one reason Ahab is so important is because it's during the reign of Ahab that we have the ministry of Elijah. और इसलिए जो इस को ज्यादा अहमियत मिलती है क्योंकि अहब के दौर में जो एलाइजा को हम देखते हैं. So you read a lot more in the Bible about Ahab than you do Omri. और हम सब आमरी से ज्यादा अहब के बारे में ज्यादा बाइबल में पढ़ते हैं. And Ahab, as you see, he reigned about 20 years. अहब जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर आपके सामने उसने 20 साल तक जो है हुकूमत की. But the other thing for which he's famous is he married Jezebel. और इसके बारे में जो एक और अहम बात है वो ये है कि उसने जezebel से शादी की. And Jezebel was from a pagan nation, and she had pagan ideas, and she helped Ahab lead Israel into deeper and deeper idolatry. और हम देखते हैं कि जezebel जो थी वो जो दूसरी नेशन से थी और उसने पेगन से थी और उसने जो अहब को अपनी तरफ लगाया और उसने बुतों की पूजा बहुत ज्यादा की. Okay, here's another king with a star by his name. Again, it's not because he was a good king. और हम देखते हैं कि एक और जो आपके सामने स्टार लगा हुआ है बोर्ड पर उसका भी मैं इसके बारे में बताता हूँ कि क्यों इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है. And you notice also that he has he's called two different things in the Bible. He's called Joram, and sometimes he's called Jehoram. और बाइबल में इसका बाज़ दफा जोरम कहा गया और बाज़ दफा जेहोराम कहा गया. But the reason he has a star by his name is because he was killed by Jehu. और इसके जो स्टार जो नाम के साथ लगाया है वो इसलिए कि वो जेहू ने उसको मार डाला. And Jehu is an interesting story. We won't get into much detail about him. जेहू की जो बहुत ज्यादा दिलचस्प कहानी है लेकिन हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. And he was successful in many ways. You see, he reigned about 28 years. वो बहुत ज्यादा कामयाब था और इसकी आप देख सकते हैं कि उसने 28 साल तक हुकूमत की और इसकी यही वजह थी कि वो बहुत ज्यादा लोगों में कामयाब रहा. And his son Jehoahaz reigned about 14 to 17 years. और अभी हम देखते हैं कि इसका बेटा जो है जेहोबाज
उसने 14 से 17 साल तक हुकूमत की। And the reason we say 14 to 7, dating for the kings is very difficult, and scholars have a real challenge figuring out exactly when some of these kings started and stopped. Okay, जो हम देखते हैं कि जो ये तारीख आपके सामने साल लिखे हैं 14 से 17 तक, तो ये जब उसके बारे में तफ्तीश की गई तो एग्जैक्ट जो है वो साल पता नहीं चलते, इसलिए उन्होंने रफली जो है ये बताया कि हो सकता है कि इस साल से इस साल तक उसने हुकूमत की। So Jehu's dynasty continues as his grandson Joash, who's also called Jehoash, becomes king, and he reigns about 16 years. Okay, उसके बाद देखते हैं जो हास के जो ग्रैंडसन है उसका जोएश और जोआश, उन्होंने 16 साल तक जो हुकूमत की। Now, even though this is a more stable period of time, every one of these kings is called evil in the Bible. जैसे हम देखते हैं कि हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल जो था टाइम पीरियड था, लेकिन फिर भी जो बाइबल हमें बताती है कि ये सबसे जो बुरा वक्त और सबसे ज़्यादा जो इसमें गुनाह हुआ। And nearly always it's in comparison with Jeroboam, son of Nebat. और जो ज़्यादातर इसके में मिलता है कि जहबाज और उसके बारे में, Because जहाश के बारे में। none of these kings did away with those golden calves. Okay, जो इनमें से कोई भी ऐसा बादशाह नहीं था तो जो गोल्डन कैफ से दूर रह सका। सब ने उस कैफ की और उस जो बनाया था बच्चा उसकी परस्तिश उन्होंने की। None of these kings, not a single one of these kings, told the people of Israel, you should go to Jerusalem and worship at the true temple. None of them. Okay, इनमें से किसी भी बादशाह ने लोगों से ये नहीं कहा कि तुम जाओ यरूशलेम में प्रस्तिश करो। उन्होंने सब ने यही बताया कि जो है कैफ जो है बछड़ा उसकी प्रस्तिश करें। Let's go on to the next page. Here we've got another Jeroboam. चलें अब दूसरे पेज पर जो आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, हम जेरोबाम सेकंड के बारे में पढ़ते हैं अभी। Now, in the Bible, he's not usually called Jeroboam II. He's just called Jeroboam, but he's not Jeroboam, son of Nebat. Okay, जो अभी आप देख रहे हैं सामने अपने जेरोबाम 2, वो जो है जेरोबाम जो हमने अपने पहले आपको बताया जेरोबाम जो नबैत का सन था, वो नहीं था, ये डिफरेंट वाला जेरोबाम है। Now, what I want you to notice especially is how long Jeroboam II was king. 40 years, a long time. मैं आपको बताता चलता हूँ कि जेरोबाम सेकंड जो है उसने 40 साल तक एक लंबा अरसा जो इसने हुकूमत की। This is the time when Israel was the strongest, was the wealthiest that they had been since the split from Judah. ये वो अरसा है जब इस्राएल बहुत ज़्यादा दौलतमंद था और बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट थी। They had a lot of peace and prosperity, and they felt pretty good about themselves as a nation. और इजराइल का ये वो दौर था जब वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा इस बात पर यकीन रखते थे कि वो खुशहाल हैं। But it's during the time of Jeroboam that Amos and Hosea come preaching, saying to the people of Israel, God is going to destroy this nation. Okay, ये वो दौर भी है जब एमस और दूसरा एमस एंड Hosea. वो आए और उन्होंने लोगों को कहा कि खुदा जो है वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। It would have been difficult for the people of Jeroboam's time to believe that because things were going so well. और इसलिए ये इजराइल के बहुत मुश्किल था क्योंकि हर चीज जो वो सही जा रही थी,
और कि ये सब होने वाला है। But as you see from looking at the rest of this list, things did not go well after Jeroboam. और आज जैसे आप देख रहे हैं कि जरबाम के बाद जो है चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई और सही नहीं रही। Jeroboam's son Zechariah became king, but he only lasted about 1 year. जरबाम का बेटा ज़करिया जो उसके बाद Why? बना बादशाह, तो सिर्फ वो 1 साल के लिए ही अपनी जो बादशाही को जारी रख सका। Why did he last only a year? Because he was assassinated by this fellow Shallum. ओके, जो इसकी जो सबसे ज्यादा जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि उसकी हुकूमत सिर्फ 1 साल तक रही। वो शालूम की वजह से वो था, बहुत ज्यादा उसके ऊपर एतबार करता था। Shallum only lasted about a month. जो है शालूम जो है वो ज़करिया के बाद आया, उसने हुकूमत ली उसको मारकर, और वो सिर्फ 1 महीने तक जो है वो रहा बादशाह। Because he was assassinated by the next king, Menahem. क्योंकि वो शालूम जो वो था वो मेनहेम ने उसको मारा और वो बादशाह बन गया। He lasted a while, 8 to 10 years. और उसने जो है 8 से 10 साल तक जो हुकूमत की। But this is a time when things are really becoming difficult. The Assyrians are becoming a greater and greater threat. और ये सबसे मुश्किल वक्त था जब, क्योंकि असीरियन जो थे वो बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। And there was a great difference of opinion in Israel about should Israel be allies with Assyria, the great empire, or should they be allies with Egypt, the other great empire? और इजराइल के ये बड़ी मुश्किल हो गई थी कि वो जो सीरियन के साथ मिले और दूसरी तरफ हो जाएं। So this tension is beginning to grow. और ये जो इनके लिए मुश्किल जो थी वो बढ़ती जा रही थी। And Menahem is succeeded by Pekahiah, but he only gets to be king about 2 years. Okay. मेनहम जो है पिकहाया के जो है बना बादशाह, और ऑलमोस्ट जो है वो 2 साल तक वो बादशाही उसने की। But Pekahiah was assassinated by Pekah, who thought they should change alliances and switch nations. और पिका के बाद जो है वो पिका बना हुकूमत उसने ली उसको खत्म करने के बाद, और वो ये सोचते थे कि हम जो है वो अपनी जो हुकूमतें हैं उनको स्विच कर लेंगे या बदल लेंगे। But Pekah, who became king by assassinating the king, he himself was assassinated after he reigned just about 4 years. और पिका भी जो है वो 4 साल हुकूमत करने के बाद उसको हुकूमत भी खत्म हो गई, उसको मार दिया गया। Hoshea became the king, but although he lasted 8 years, he was the last king of Israel. और हम देखते हैं कि सबसे जो आखिर में है वो होशेया बना, और उसकी हुकूमत जो है 8 साल तक रही, और ये सबसे जो आखिरी था वो बादशाह था 722 BC में तक जो है। So as you see there, he lasted until 722. That's when the Assyrians came in and completely destroyed Israel. और हम देखते हैं कि 722 BC तक इसकी हुकूमत रही। ये वो दौर था जब जो है सीरियन आए और उन्होंने completely जो है इस्राएल हुकूमत को खत्म किया। And what the Assyrians did, they would take a population. When they conquered them, they would take the survivors and move them to another part of their vast empire. और असीरियन जब आते थे, अटैक करते थे, और वो जब लोग बच जाते थे उनको लेकर और दूसरे जो है हिस्सों में उनको भेज देते थे, ले जाते थे। And they would bring in new people from another part of their empire and settle them in the place they had just conquered. ओके, जो उन्होंने जो जगह फतह की होती थी उधर लाके वो अपने लोगों को
आबाद कर देते थे। So the people who had lived in Israel now have to live somewhere else, and the people who had lived somewhere else now live in Israel. और ये देखते हैं हम कि जो इस तरह जब उन्होंने किया तो जो लोग इस्राएल में रहते थे वो कहीं और रहते हैं और जो कहीं और रहते थे वो अब इस्राएल में रहते हैं। And of course they intermarry with the people from Israel who have been left behind, and you get a mixed population. This is where the Samaritans come from. ओके, और हम देखते हैं कि जब ये लोग यहाँ पर उन्होंने बुलाए उन्होंने वहाँ के लोगों से शादी की और फिर वो जो है उनसे एक अलग जो है समरियन जो कौम है वो डेवलप होती है। So I don't expect anybody to remember all of these names. मैं ये नहीं आपको चाहता कि आप सारे जो नाम हैं जो बोर्ड पर आपको मैंने जिनके बारे में बताया याद करें। I teach Bible and I don't remember all of these names. मैं बाइबल पढ़ाता हूँ लेकिन मुझे भी ये सब जो नाम है सारे के सारे याद नहीं है। But I do want you to notice how many kings they had in about 200 years as a nation. They had about 20 kings. लेकिन आपको ये याद रखना है कि इस सारे दौर में 200 साल में कितने जो है बादशाह आए, वो तकरीबन कितने हैं 20। So even if you took the average would be 10 years. और अगर आप इसके एवरेज देखें तो इसका तकरीबन जो है 10 साल बनते हैं। But that wouldn't really be a true story because what happened so often was that the king was replaced by an assassin. आप देखते हैं कि ये जो है ये सिर्फ एक आप इस कहानी को इस तरह नहीं ले सकते क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी कोई दूसरा बादशाह आया उसने पहले बादशाह को मारा और फिर वो उसने उसके जो है उसके तख्त पर बैठा। And there's nothing unusual about that except it's in complete contrast to what was going on in Judah. और ये मुकम्मल तौर पर एक ऑपोजिट है। And we're going to look at that again by reminding ourselves of this chart. और हम एक दफा फिर से ये चार्ट को देखते हैं ताकि हम इसको याद कर सकें। We've looked at the history of Israel. Now we're going to look at the history of Judah. और अब पहले हमने अभी जो सारी इस्राएल की तारीख पढ़ी, अभी हम जूदा के बारे में पढ़ना चाहते हैं। But not just yet. I'm sorry. Go ahead. Okay, अभी नहीं लोग थोड़ी सा मुझे टाइम दे। Yeah, because I wanted to talk about Elijah and Elisha first, so we're still going to talk about Israel. I'm sorry. Okay. मैं दोबारा इजराइल के बारे में बताऊंगा क्योंकि जूदा के थोड़ा जो मैंने बताना था इजराइल वाले पार्ट में तो वो मैं आपको बताऊंगा फिर उसके बाद हम जूदा में चलेंगे। Because they are part of the history of Israel. क्योंकि वो जो है वो इजराइल की तारीख का हिस्सा है। And in fact, we have more details about these two prophets than we do about the kings. और हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में जो डिटेल जो है बाइबल में मिलती है एलाइजा और एलाइशा के बारे में बजाय के ज्यादातर किंग्स के बारे में। Elijah's story is very long and we don't have time to go through all of it, but these are some of the highlights. एलाइजा की जो कहानी है वो काफी लंबी है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सारा उसके बारे में पढ़ें, लेकिन मैं बिल्कुल जो है मेन जो उसके पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। First of all, Elijah is going to tell the king it is not going to rain. There's going to be a drought in Israel until I pray for rain. ओके, आप देखते हैं कि पहला सलातीन सारा में कि एलाइजा जो है वो बताता है कि इजराइल में बहुत ज्यादा जो है कहत पड़ेगा और बहुत ज्यादा सूखापन होगा। And there's a very interesting story about how God provided for Elijah and protected him during this time. और इसके बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्प कहानी है जो खुदा जो है इसको एलाइजा को प्रोटेक्ट करता है और उसको हाल करता है।
And we're going to look at this passage in a few moments. 1 Kings 18, the confrontation with the prophets of Baal. और हम देखते हैं सलातीन पहला सलातीन उसके 18 में किस तरह से जो प्रॉफिट के बाल का प्रॉफिट है उसके साथ उनका जो सामना होता है. And then after that, about when Elijah flees Jezebel and goes all the way back to Mount Sinai, and then later he gets Elisha to be his assistant and successor. और फिर हम देखते हैं कि सलातीन पहला सलातीन 19 में किस तरह से जिनका वहां से जेजबेल से उन्होंने छुटकारा पाया और उनकी जो आवाज जो मौत सुनाई तक उनके बुलंद हुई. So let's turn to 1 Kings 18. This is where I'm going to ask you to do some reading. 1 Kings 18. Now remember, this is in northern Israel, and it's during the reign of Ahab and Jezebel. और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो इज़राइल और एहाब और जेज़बेल के बारे में 18 you want me to read from the start? No, not from the beginning of the chapter. Let's start with verse 21. 21. And this is, let me set the stage. Elijah says to the king, let's get all the prophets of Baal together, and we're going to have a contest. और मैं आपको यहाँ पर छोटा सा बताना चाहता हूँ प्लॉट उसका कि जो है इज़राइल ने अहाब और जेज़बेल के दौर में जो कहा कि अपने जो है बुतले और उनको लेकर. So they meet at the top of Mount Carmel. और they can और वो कार्मल में उनको मिल सकते हैं. So 22. So verse 21. 21. Okay. और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावन ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसके पैरवी करो. पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब न दिया. तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावन का नबी बच रहा हूँ, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं. All of you. 21's farther. Yeah. Did you go further? Yeah. Okay. How far did you go? I read 22 too. Okay, that's fine. That's good. Notice a couple of things here in 21 and 22. The people are gathered to see what's going to happen, and Elijah asked them, how long will you go? This translation says limping. Other translations say dancing or hopping. और जब हम देखते हैं कि इसमें पढ़ा है हमने पहला सलातीन उसकी 18-21 आयत में कि वहाँ पर जो है कि एलिया जो है वो लोगों से कहता है कि तुम कब तक दो ख्यालों में बटे रहोगे. अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है कि एक तरफ तो तुम बाल की इबादत भी करते हो और उसकी पैरवी कर रहे हो, और दूसरी तरफ खुदा के भी पास जाते हो. What he's picturing for them is that sometimes you stand on one foot and you worship the Lord, and the other times you stand on the other foot and you worship Baal. And he says you're just jumping back and forth, back and forth, back and forth. Make up your mind which one is really God. और हम देखते हैं कि खुदा उनसे कहता है कि एक जो है तुम एक तरफ तो बाल की प्रस्तिश करते हो और दूसरी तरफ जो है तुम खुदा की प्रस्तिश करते हो. और इसी तरह जैसे अभी आपने देखा कि डॉक्टर ऑट्री ने आपको करके बताया कि एक टांग पे वो खड़े होकर बाल की प्रस्तिश कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ होकर वो खुदा की प्रस्तिश करते हैं. तो वो कहते हैं कि तुम कब तक ये करते रहोगे, कब तक यूं चलता रहेगा. Now, this is the message of Elijah
but it's also the message of just about every prophet that God sends to Israel and to Judah. Make up your mind and serve the Lord. और ये हम देखते हैं कि सिर्फ एलाइजा ही के जरिए खुदा ने ये लोगों से नहीं पैगाम भेजा अपने लोगों को, बल्कि उसने ऑलमोस्ट जो तमाम जो प्रॉफिट जो उसने खुदा ने भेजे उनके जरिए ये पैगाम इनको दिया कि वो सिर्फ खुदा की तरफ या तो खुदा की प्रस्तिश करें या फिर बाल की तरफ हो जाए. Remember the first of the 10 commandments, you shall have no other gods before me, which could also mean you shall have no other gods besides me. यही जब आप देखते हैं 10 हुक्म, तो उनमें सबसे पहला हुक्म यही है कि मेरे अलावा कोई दूसरा खुदा तुम्हारे दरमियान ना हो. And in Deuteronomy 6, God had said through Moses, the Lord, Yahweh, is one God, and you should love the Lord your God with all your soul, your mind, your strength, your whole being. और हम ड्यूटरोनॉमी में ये देखते हैं कि खुदा ने भी यही पैगाम दिया कि तुम्हारा सिर्फ एक ही खुदा होना चाहिए, उसी के अपने दिल से और अपने दिमाग से और अपनी सारी जान से खुदा की प्रस्तिश करें. But what the people were doing, they were still worshiping the Lord, or at least they thought they were, but they were also worshiping Baal and other gods as well. और ये लोग जो थे वो आप देख सकते हैं कि वो खुदा की भी प्रस्तिश करते थे और दूसरी तरफ वो बाल की भी जो देवता था उसकी भी प्रस्तिश करते थे, और इनके अलावा और दूसरे भी देवता थे जिनके पास वो जाकर उनके वर्शिप करते थे और उनके पूजते थे. I think it's interesting that we're told the people didn't answer. They didn't know what to say. They didn't want to give up either God. हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहें. And Elijah believed, I think sincerely believed, he was the only one left of the Israelites who was being true to God. और एलाइजा को ये सब महसूस होना शुरू हो गया था कि वो सिर्फ एक ही जो है बचा है जो सिर्फ खुदा के हकीकतन खुदा को प्यार करता है और उसकी मुंह पर चलता है. God corrects him on that later and says, I have 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. और खुदा उसको बाद में उसको ये रियलाइज कराता है और उसको बताता है कि तुम्हारे अलावा भी जो 7,000 लोग हैं जो इन्होंने अभी तक बाल को सिजदा नहीं किया. But Elijah at least seems to feel like he's the only one being faithful. लेकिन एलाइजा को ये गलतफहमी थी कि वो ही सिर्फ अकेला है जो बाल के आगे अभी तक नहीं झुका. But what he does after this, it's so bold. So courageous. You can tell that he knows God has been talking to him. God has sent him. लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जब इसके बाद जो हुआ वो इससे पता चलता है कि वो ये समझता था कि मैं जो है खुदा मेरे साथ है और मैं ही हूँ जो जिसने बाल को नहीं सिजदा किया. तो वो अपने आप को स्पेशल समझता था. This verse 24, I think, is very interesting. If you could read that. 24. Mm-hmm. और ये जो 24 है सलातीन पहला सलातीन उसकी 24 आयत बहुत ज्यादा दिलचस्प है. मैं आपके सामने पढ़ूंगी इसको. तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे. और सब लोग बोल उठे खूब कहा. Okay, this is the terms of the contest. Whichever God answers by fire, then we're going to say that's the true God. Okay, अभी हमने पढ़ा कि 24 में जो 24 आयत में लिखा है पहला सलातीन उसकी 24 आयत में कि जो भी जो है आग दिखाए उसको हम समझेंगे कि वो सही खुदा है या सच्चा खुदा है. And this time the people who had been silent before and didn't know what to say, this time they've got a comment. They say, it is well spoken, or
are really, in American, we would just say, okay, sounds like a good idea. और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग खामोश हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, और वो इसका यही मतलब है कि यहाँ अमेरिका में हम समझते हैं कि जब कोई जवाब ना दे तो इसका मतलब है कि वो रजामंद है. So we won't read all the details, but the prophets of Baal begin to pray, and they pray with all their might. They dance around the altar, and they just go on and on and on. और हम देखते हैं कि वो ऑल्टर के इर्द के चौगिर्द दुआ करते हैं, डांस करते हैं, और ये सब चलता रहता है, जारी रहता है. They even cut themselves to make their blood flow. और यहाँ तक कि वो अपने आप पर कट्स भी लगाते हैं, अपने आप को काटते हैं, और जो खून है उनके जख्मों से बहता है. But it says, no voice, no one answered. और लिखा है कि कोई आवाज नहीं है, कोई आंसर या कोई जवाब नहीं. Even though they danced around the altar or limped around the altar. Even though उन्होंने जो डांस किया और उसके गिर्द चक्कर लगाए, कोई जवाब नहीं आया उनका. Elijah can't resist mocking their God a little bit. और एलिजा अपने आप को जो है वो बाज नहीं रख सका कि उनके जो देवता है उनके बारे में उनको बताए. Maybe he's asleep, or maybe your God has gone to the toilet. और वो उनको मजाक करके कहता है कि मे भी तुम्हारा जो खुदा है वो बाथरूम चला गया है, और मे भी सो गया है. I'm sure that made them very angry. और मुझे यकीन है कि ये सब मॉकिंग जो है जो एलिजा से की है वो सब उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह होगी, और उससे नाराज हुए होंगे. Certainly these prophets of Baal became more desperate, and that's when they cut themselves. और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो गुस्से में आकर उन्होंने अपने आप को काटना शुरू किया. But verse 29 again says, there was no voice, no one answered, no one paid attention. और फिर हम देखते हैं दोबारा जो वर्स 29 में कि कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं, और कोई भी उसमें जो है वो उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा. All of that repetition is really putting an emphasis on this. No response, no response, no response. और हम देखते हैं कि बार-बार हमें इस चीज का बताया जा रहा है कि कोई जवाब नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, और कोई भी जो है कोई भी जो उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा. And finally, it's Elijah's turn to pray. और अभी जब देखते हैं कि अब एलिजा की बारी है कि वो दुआ करे. And notice this in verse 30. It says he repaired the altar of the Lord. There was an altar that had been built there to the Lord, but it had been thrown down. अभी देखते हैं कि एलिजा की बारी है, और देखते हैं कि जो ऑल्टर है वो गिरा दिया गया था, और जो है उसको दोबारा से उसको जो है उसकी तबाही हो चुकी थी. Again, this is so much like what the other prophets are going to do. They call the people of God back to God. Come back to God. Let's worship the Lord. Stop worshiping the idols. Come back to God. Come back to God. और एलिजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा कि खुदा के दूसरे नबियों ने जो किया कि लोगों को ये बात याद दिलाएं कि दोबारा खुदा की तरफ फिर जाएं, और जो वर्शिप जो करते हैं ये बुतों को जो पूजते हैं उसको खत्म करें, और खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाएं. And then, as Elijah prays, before he prays, he builds the altar, and you can see that he used 12 stones, because all 12 tribes still belong to God. Okay, हम देखते हैं 31 और 32 आयत में कि एलिजा जो है बनाने से पहले हैकल को वो 12 कबीलों को 12 पत्थरों से जो है उसको रखता है उधर. यकूब के जो 12 सन
जो 12 उसके बेटे थे उनके मुताबिक। And then he does this remarkable thing. He soaks the sacrifice and the wood and everything with water, as much water as they can get. और हम फिर देखते हैं कि जो 33 आयत में जो है वो सैक्रिफाइस को पानी के साथ जो है उसको भिगोकर दिखाया गया है। Okay. Now, if you would read, starting with verse 36, and go through 40, 36 to 40. 36 to 40. Okay. और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ए खुदावन इब्राहिम और इसाक और इस्राइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदावन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावन तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावन की आग नाजिल हुई और उसने उस सोखनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंत वही खुदा है और खुदावंत वही खुदा है। और एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो और उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया और उनको नीचे के सून के नाला पर ले आया और वहां उनको कत्ल कर दिया। All right, notice the things that are emphasized here. आप देखें कि यहाँ पर क्या किस बात पर जो है जोर दिया गया है। It's a short prayer compared to the prophets of Baal. यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत मुख्तसर सी दुआ है जो हम देखते हैं जो एलिया ने की, क्योंकि हम देखते हैं कि बाल के जो पूजा करने वाले थे बहुत ज्यादा लंबी दुआ की और कुछ भी नहीं हुआ। But Elijah prays, "O Lord, let it be known." और एलिया ने यहाँ पर दुआ की कि खुदावंत ये सब मालूम हो। He says, "Answer me that this people may know." और खुदा से उसने कहा कि खुदावंत मुझे जवाब दे ताकि ये लोग जान सके That you, Lord, are God, कि तू ही खुदावंत खुदा है, and that you have turned their hearts back. He's saying, this is your big opportunity, people, to come back to God. और उसने ये कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा मौका है कि तुम आकर खुदावंत की तरफ अपने आप को खुदा की तरफ लगाओ और खुदा के प्रस्तिश करो बजाय बुतों की पूजा करने के। And surely God answers with fire from heaven, which consumes not only the offering, it consumes the wood, it consumes the stones, the dust, and licked up the water that was in the trench around. It just consumed everything. और आप देखते हैं कि जब खुदावन एलिया की दुआ का जवाब देते हैं तो सिर्फ यही नहीं कि खुदा ने जो है उसकी ऑफरिंग को कबूल किया, बल्कि जो उसकी जो लकड़ी जो थी और जो पत्थर जो जिस पर रखी थी और जो मट्टी थी वो सब जो है वो उस आग में जो खुदा ने नाजिल की उसमें सब जलकर खत्म हो गए। And this would be scary, but the people says, the Lord, He is God. Yahweh, He is God. और आप देख सकते हैं कि सब लोग ये देखकर एकदम से घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि वही खुदा है, वही खुदा है। और So I think if I had been there, I would have been frightened, and I think I would have fallen on my face as well. मेरा ख्याल है कि अगर मैं भी इस जगह पर होता तो मैं भी एकदम से ये सब कुछ देखने के बाद जमीन पर गिर जाता और खुदा से तौबा करता और उसका नाम लेना शुरू हो जाता। And then Elijah gets them to help him. He says, don't let these guys go, these prophets of Baal, capture them all, and they kill them. और एलिजा जब ये सब कुछ हो जाता है तो लोगों को जो उसका रिस्पांस देकर तो एलिजा क्या कहता है कि
इन सब बाल के जो जितने भी प्रॉफिट है, जितने भी नबी हैं, इन सबको पकड़ो और उनको मार डालो. But we'll need to talk about the aftermath of this, because even though there's going to be more miracles after this, Elijah is going to have a great crisis in his own life. इन सब के बाद हो जाने के बाद जो हम consequences देखते हैं कि क्या हुआ. And right now I see that I've gone a little past the time that we should, so we need to stop for today. मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा वक्त से ऊपर चले गए हैं, तो मैं आज यहाँ पर अपना जो है लेसन को खत्म करूँगा.